And right now, the latest development is that Sisodia is claiming and he is saying that the CBI team is at his residence. Akash, essentially what I wanted to ask is, do you think we're likely to see an arrest today? So we can't say anything on that, but this is what I was mentioning, in fact, just a few minutes back, that Aisha, this is not the first time. We have seen in the past as well when Arvind Kejriwal and all other leaders from Aam Aadmi Party have in fact claimed that now they're expecting that after Satin Jain, Manish Sisodia would be arrested. And now this is the biggest development of this morning, where we have learned that, Manish Sisodia is in fact claiming that, CBI officers are at his house. We don't know as to which case they are investigating and also if they are going to arrest Manish Sisodia. But we know the developments that happened in the past few months, where LG has recommended a CBI probe into the new excise policy that was implemented in November 2021. And also at this point in time, we are learning that some 7 to 8 officers are at the residence of Manish Sisodia. In fact, Aam Aadmi Party sources are telling we haven't got any sort of confirmation as to how many people are there and as to which case they are investigating. But at this point in time, Manish Sisodia has in fact claimed that CBI officers are at his house, and he has welcomed this particular move as well. All right, now Akash, can you also tell us about what the Delhi Chief Minister has said in response to the allegations made by the BJP when it comes to the Delhi excise policy? So, we saw how, Arvind Kejriwal held a press conference after the allegation, in fact, after the recommendation of LG, and he said that, he was very much sure about Satin Jain. He is very much sure about Satin Jain, and also in case of Manish Sisodia, he is very much sure because he knows that as far as his ministers are concerned, all his ministers are doing some good work for the people of Delhi, for the betterment of Delhi. And in case of Manish Sisodia is the man who has worked for the education policy of the national capital. And that's the reason why he is very much sure that nothing bad has been done by, Manish Sisodia as of now. All right, Akash, stay with us because we are now being joined by Ravi Srivastava, who is an analyst. Mr. Srivastava, thank you so much for joining us. Essentially, what's happening right now is that a CBI team is at Manish Sisodia's home. Can you tell us how you see these developments? Absolutely not. This is a well-designed standard operating practice of the BJP, and Arvind Kejriwal, the Chief Minister, had predicted as early as in the January 2022 that they will be doing this kind of raid or arrest or all these things on Manish Sisodia also, because Manish Sisodia has done a wonderful work in the field of education, which is not admired domestically. Even the foreign people have admired the Delhi's education system. And he is just not scared. You must have seen his tweet also, that he welcomes the CBI at his home. Let them do whatever search they want to do. Let them make a case whatever they want to do. There is absolutely no fear among the AAP leaders. And as far as the case is concerned, it will just fall flat like 150 more cases which were made for the AAP MLAs and AAP leaders, which some of them did not see even the charge sheet. And the courts had put up very stringent remarks against the prosecuting agencies that you are making false cases and you are just trying to harass the Aam Aadmi Party people from doing their good work. Yeah. Now, Mr. Srivastava, essentially, how do you see the AAP's response when it comes to this entire policy row? Essentially, what they've said is that they acted in their best interests. They do not essentially. They did eventually make a U-turn when it came to the excise policy, but they've also been hitting out at the center. Now, it seems like we've lost that connection. We will try to establish that. We also have some information essentially about this, about how there are also searches at the premises of senior government officials as well. Now, essentially, a little while ago, earlier this morning, the Delhi Chief Minister had tweeted out saying that Delhi has made India proud. The Delhi model is on the front page of the biggest newspaper of the US, and Manish Sisodia is the best education minister of independent India. This is a tweet that the Delhi Chief Minister had said about Manish Sisodia. Now, what the development is now the CBI team is at Sisodia's residence. This is going to be in connection with the Delhi excise row, and we're going to be seeing more developments take place later today. We may even be seeing an FIR being registered when it comes to this case, because remember, the Lieutenant Governor had earlier recommended a probe
into the Delhi excise row. And now there is a CBI team at Sisodia's home. So essentially the tweet that we're playing out where he made the claim, that is what we're playing out on your screens right now. And essentially another thing that he said in the tweet is he's calling this harassment by the center. Now I'm crossing over to my colleague Shankar Anand to give us more details on this. Shankar Anand, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इस वक्त में सीबीआई की टीम पहुंची है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के घर पे, और खूब इस मामले की जानकारी मनीष सिसोदिया के द्वारा दी। और जिस तरह से सिसोदिया की अगर बात करें तो वो पहले से इस मामले पर लगातार बोलते रहे हैं। हालांकि जो मामला है इस मामले में वो एफआईआर की कार्रवाई करने या जो प्री रजिस्टर्ड यानी जो एक प्राथमिक जांच का मामला रजिस्टर्ड करता था, इस मामले पर सर्च ऑपरेशन है या दस्तावेज देने आई है, इस मामले पर अब तक सीबीआई के द्वारा नहीं बोला गया है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिस तरह से प्राथमिक मामला सबसे पहले दर्ज किया जाता है और उसके बाद उस मामले से संबंधित दस्तावेज सीबीआई की टीम कई बार मौके पे पहले भी मनीष सिसोदिया के घर पे ऐसा हो चुका है। लेकिन आप ऑफिशियल काम तो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरे मामले की बात है तो जिस तरह से दिल्ली के अंदर में जो एक शराब पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी जो बनी थी, और उस पॉलिसी को लेकर जिस तरह से एक सवाल उठाए गए थे और जिस तरह से इस मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा एक शिकायत सीबीआई को भेजा गया था और कहा गया था कि इस मामले के विस्तार से उचित कानूनी जांच होनी चाहिए कि एक्साइज पॉलिसी के तहत किस तरह से उसका खिलवाड़ किया गया है। और इस मामले को लेकर पिछले एक महीने से काफी चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। निश्चित तौर पे जिस तरह से उपराज्यपाल के द्वारा खत भेजा गया और इस मामले की रिक्वेस्ट किया गया कि इस मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस मामले को दर्ज होना चाहिए, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई आगे की तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के दौरान तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, तमाम मुद्दों को खंगाला जा रहा है। निश्चित तौर पर इस वक्त कहा जा सकता है राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना कही जा सकती है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं। तो अगर उसके घर में सीबीआई की टीम पहुंचती है और मनीष सिसोदिया और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो खुद इस मामले पर ट्वीट बता रहे हैं, लेकिन सीबीआई की टीम अभी तक औपचारिक से ये नहीं बता रही है कि वो एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले पर एक्शन के लिए पहुंची है या वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए पहुंची है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक्साइज पॉलिसी के मसले पर जो भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप थे, उसी आरोप पर आगे ये कार्रवाई देखने को मिल रहा है और इसमें कहा जा सकता है कि जल्दी कुछ और भी बड़ा एक्शन अलग अलग लोकेशन पर भी देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, और आप बता सकते हैं कि बीजेपी ने ये एक्साइज पॉलिसी के बारे में और क्या कहा? क्रिटिसिज्म्स क्या आया है बीजेपी से? देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार ये एक्साइज पॉलिसी को लेकर पिछले काफी समय से सवाल उठा रही है और बीजेपी भी इस मामले को लेकर कह रही है कि एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे कि अब आपको बताना चाहूँ कि जो शराब के जो दुकान है उसको टेंडर को लेकर और उसके बंटवारे को लेकर एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया, उस मामले को लेकर सवाल उठाया जा रहा था। बीजेपी के द्वारा दिल्ली बीजेपी की बात कर ले या बीजेपी की बात कर रहे हैं तो इस मामले को लेकर पिछले काफी दिनों से काफी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और बीजेपी के द्वारा लगातार इस मामले पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर पैसों का खेल हुआ है। ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 5 महीने 6 महीने के दौरान की बात है कि जिस वक्त में चाहे यहाँ देखा जाए शराब पॉलिसी की अगर बात करें, एक के साथ एक भी जगह पॉलिसी क्यों लाया गया, इसके साथ ही जो पहले का जो एक टेंडर था उस प्रणाली को अचानक रद्द करके फिर एक नई प्रणाली लाई गई, एक नया सिस्टम लाया गया जिससे शराब की दुकानें जुड़ी हैं, तो वो क्या बन रहा है। और इसके साथ ही जो तमाम अलग अलग जगहों पर जो नए दुकान का आवंटन हुआ, तो उन तमाम की जानकारी के लिए तमाम चीजों को समझने के लिए कहा जा सकता है कि दिल्ली बीजेपी के द्वारा ही Shankar Anand, thank you so much for giving us